COVID-19 is a disease caused by the new coronavirus. Know the symptoms. They include fever, coughing, muscle pain, shortness of breath. What can you do? Wash your hands frequently with soap and water for 20 seconds or use an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. When coughing or sneezing, cover your mouth with a tissue or flexed elbow. Discard tissues into a closed bin and then wash your hands. Maintain a distance of at least 1 meter between yourself and someone who is ill. Seek medical help if you display symptoms. Wear a mask if you are coughing or sneezing, or if you are caring for someone who is sick. Dispose of your masks into a closed bin and then wash your hands. Check trusted sources regularly for accurate information. Remember, the best prevention is to keep yourself healthy and follow these safe steps. Hello SPEI, a very special day for all of us associated with St. Paul's Education Institution. 6th of July 2021, yes, Principal's Day. Even 2 years back, we used to have grand celebrations at Sarat Southern jointly by St. Helens and St. Paul's Education Institution. But this pandemic has compelled us to be locked up in our houses, to celebrate, to participate in all celebrations of life virtually. But still, we have not forgotten that today is a very, very special day for us, because all of us have come under one banner, have got this opportunity to share the same platform, have enjoyed each and every moment of our journey in St. Paul's because of two wonderful people, of two visionaries who around 25 years back founded St. Paul's. Sir and ma'am, just a small thank you to thank them on their special day is not enough. Great principals, great educators, great visionaries, two people who have inspired us, who have motivated us, and continue to do so. I know Sir is not physically present with us, but he continues to remain in our hearts. His presence, his words, his way of working, everything about Principal Sir continues to remain in our hearts, continues to motivate us, and continues to inspire us. It is their birthday today, 6th of July. Sir, your inspirational presence in our lives have left an indelible mark, and your words, which we so fondly remember during our assembly, morning assembly, are like beautiful footprints that have been etched in our heart and minds forever. Happy birthday, sir. I know you are there somewhere, seeing and enjoying this virtual celebration that we are trying to contribute so that you feel happy. Sir and madam together, two people who are leaders, people who have been, great motivators, great teachers, great leaders. And, their leadership is like, today I lead the school because tomorrow my students will lead the world. Yes, this is exactly the way they have brought up these two schools, that is St. Helens and St. Paul's Education Institution. Both of you are great principals. I'm using the word are because Sir will always remain present for us. Both of you deserve the grandest of celebrations. We are not celebrating this virtually because it is courteous on our part to do so, but because we sincerely wish to see you smile wherever you are on this special day. Your influence
from the lives of everybody attached to St. Paul's can never be erased, because both of you have always led from the heart. So your students, your teachers, your staff have always understood your language, because your leadership came straight from the heart. The purpose of these virtual celebrations is to make both of you happy. Wherever sir is, I know he will be smiling today. And ma'am, you are very, very special to us. We always want to see you healthy, smiling and energetic as you have always been. Small steps, they say, in the right direction can turn out to be the biggest step of your life. Sir and ma'am took small steps some years back in founding this school, but it has turned out to be the biggest step of their lives, because it is still shaping the lives of innumerable students. You know, the meaning of life, you have to find your own gift in life. And when you find your greatest gift in life, you should not hold on to it. You should not cling on to it. You should give it away. That's what exactly these two people have done. They have found the purpose of their lives, the greatest gift of their lives, to impart education, and they have given it away so wonderfully that not only have students passed out from the school, shaped careers of which we are very proud of, but there are still students in the school who are following the same road. Thank you, sir, and thank you, ma'am. Good morning, respected madam, teachers and all my dear friends. Today, as we all know, is a very special day. On this day, our respected and beloved madam and sir were born. Our sir is a great source of inspiration for us. His wisdom, his knowledge, his affection for students is second to none. We are really lucky to have them and learn a lot of things under their proper guidance. Our principal is not only the most caring person in the school, but also the one behind the rules and regulations, carving fine academic curriculum and co-curricular activities, representing the school on a local and a global map. And the list of duties are unending. I have seen Madam meticulously observing the growth of every student and rendering helping hands to the needy ones. Our Madam is the most respected and the most responsible authority of the institution. Our Madam, it is you who taught us the true meaning of education and how to live a complete life in a gentle way. During the school times, I have noticed that your strong voice was sufficient enough to bring the notorious students back to discipline. I highly admire your leadership traits and the notion of relentless learning. It's because of you that our school became a center for educational excellence. We can never repay what you have done for us. Thank you so much for teaching us the true meaning of hard work, discipline and determination to succeed in life. May you live a long life full of zestful moments. A great principal, an enthusiastic teacher, a vision, an unparalleled mentor, you have played all the roles with utmost dedication.
Thank you for so much patience and dedication. Any hard work is futile if the direction is wrong. You showed us the path to succeed in the life. You are really a marvelous person. On this special day, on behalf of the entire school, I feel more than proud enough to wish you a happy birthday. God bless you. Thank you. There's always once upon a time when a writer wants the heart of his readers to chime. Now I realize that our school life can also be compared to as once upon a time, because stepping out of the house has now become a crime. 19th March 2020 came with a curse in disguise. Life went downhill since then and never took a rise. Boards cancelled cheerful mind. We never knew that online classes won't be that kind enough to give us the presence of that feel of our friends, teachers and the zeal. Some batches completed their school life on a random afternoon and never got to leave their last recipe. This online schooling is fun, but something is lost. We want to enjoy the last year just the way we thought. नमस्कार, मैं अनिंदिता आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। ये जो समय चल रहा है ना, बहुत कुछ है हमें ये सिखला रहा। शिक्षक अवश्य हैं हम, पर सीखना हमें भी बहुत कुछ है अभी ये सिखला रहा। ये जो पूरा दिन हम लगे हैं ना आजकल प्लानिंग में पढ़ाने की, असीम शक्ति है मनुष्य के अंदर ये भी दिखला रहा। ये जो समय चल रहा है ना, सच में हमें बहुत कुछ है सिखला रहा। आयु नहीं होती है सीखने की। जहाँ ऑनलाइन क्लास 3 साल का बच्चा है ले रहा, वहाँ 50 का शिक्षक भी इंटरनेट पर ऑनलाइन पढ़ाने की नई तरीके है ढूंढने में लगा। ये जो समय चल रहा है ना, बहुत कुछ है हमें ये सिखला रहा। इसने शिक्षक और शिष्य को ला खड़ा किया है एक समान। दोनों ही पहचान रहे अपने अंदर छुपा शक्तिमान। माना वो स्कूल वाली बात नहीं, ना ही वो क्लास, ना ही प्लेग्राउंड, पर कम से कम साथ तो हैं, ये भी समय बतला रहा। ये जो समय चल रहा है ना, बहुत कुछ है हमें ये सिखला रहा। वो हमारे प्रश्न पूछने पर वो पीछे पलटकर दूसरे बच्चों को देखते थे, पर आज ऑनलाइन प्रश्न पूछने पर वीडियो ऑफ करके शांत हो जाते हैं। सिग्नल्स ठीक से नहीं आ रहे हैं मैम, ये हमें वो बतलाते हैं। जो बच्चे कक्षा में हाथ उठाकर सब बताया करते थे, वो आज हैंड रेस करके चैट में सब बताते हैं। बातें तो सारी वही हैं, बस अंदाज थोड़े बदल गए हैं। अब तो बदला पेपर का भी स्वरूप है, पर आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। ये भी तो समय ही बतला रहा। ज़रा ध्यान से सोचो, क्या सच में ये समय हम सबको और पास नहीं ला रहा? कितने अनमोल है हम एक दूजे के लिए। क्या सच में ये हमें नहीं समझा रहा? क्या जब फिर से एक बार सब स्कूल में साथ होंगे, तो क्या नहीं और ज़्यादा सम्मान, और ज़्यादा प्रेम, और ज़्यादा सद्भाव के पात्र होंगे? सच कहूँ, वो दिन भी सालों साल याद रहेंगे जब हम फिर से एक बार स्कूल आएंगे। सच में वो खुशी कुछ और ही होगी जब शिक्षक और शिष्य एक दूसरे को साक्षात सामने अपने समक्ष पाएंगे। धन्यवाद। St. Paul's has always boasted of a very rich cultural tradition. St. Paul's is special to each and every member because
St. Paul's, the moment you step inside the school premises, you feel that vibration, you feel that positivity, and you feel the bond. Yes, a bond which is shared among each and every member of this institution. In these days of the pandemic, when the school building is no longer echoing with the sounds of the children, no longer can the teacher's voice be heard scolding the children, no longer are the children, gathering for the morning assembly, no longer can we see the children gathering for the tiffin time, dispersing after the school bell goes. I think all of us, the most important thing that we miss today is actual school life. All of us, whether it is a child, whether it is a teacher, whether it is principal ma'am, whether it is the staff, everybody. This celebration virtually of Principal's Day, most of the performances reflect that, emotion of the child, emotion of my children, their longing to be back in school. We are missing one thing which all of us are missing today is the school. And this virtual celebration, in whatever way they have been able to actually bring out their emotions, whether it is the school for them is a sign of hope, is a sign of happiness. For them it is a place where they can again redo, or they can correct their mistakes. जब कोई बात बिगड़ जाता है, then they can always get together and put things right. To them, school is it's sacred to all of us. It is there in our hearts. SPI resides in the heart of each and every family member. And it is reflected in each and every performance. Tere mere pyar ki umar salamat rahe. Please remember this, whether it's corona. I know this is giving us a lot of pains, but the bond between the school and SPI family has not become weak at all, because तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है. Please enjoy the performances. Thank you. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तू हमनवा. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा. मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा. मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए. कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता. कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है. जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए. जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई.
जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। बूंद बूंद जोड़ेंगे, पल पल दूर दूर बह जा।
तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ज़मीन आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। सारी
सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा क्या मुनबो का मुंटा रे। फतेह करे किले सारे, भेद जाए दीवारें, प्रेम कोई सेंध लागे अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले, जिया नहीं गेंद लागे। माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा क्या मुनबो का मुंटा रे। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले जिसकी उम्मीदें रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है। रिश्ता पुराना है, रिश्ता पुराना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है।
तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन। मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन। इन पलकों पे हर सपना मुझको सजाना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जब धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसे ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो
डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी। आज हो